आपस में बातें हो गई हो तो थोड़ी मेरे से भी बातें कर लो। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस टेस्ट ऑफ इकोनॉमी। आज होगा टेस्ट इकोनॉमी का। टेस्ट एक्चुअली मेरा है, दे आप रहे हो। इन दिस टेस्ट देयर विल बी नो MCQs, देयर विल बी नो questions, there will only be active recall. Today, in 3 hours, our task is to revise everything we have read so far. सब कुछ जो हमने पढ़ा है we will revise. I will see आप लोगों ने कितना रिवाइज किया है, क्या किया है ना। I am not a myth, legend, star, whatever of economics. I am merely your teacher of economics. ठीक है, and myself a student of economics. Now let's see how good of a student of economics you are. ठीक है, ये बात करेंगे. We will discuss this पूरी इकोनॉमिक्स इन द ऑर्डर दैट वी हैव स्टडीड, स्टार्टिंग फ्रॉम, लिख देता हूँ एक चार्ट जो मैंने शुरू से एक ही बात करी है इकोनॉमिक्स की. I'll just write that. This is also tradition. This has to hang months before I can start teaching on it. वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं अभी चैट ऑन कर दूंगा, डोंट वरी. सो शुरू से एक ही बात लिखी है मैंने. फर्स्ट वी विल स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, then we will study macroeconomics. In macroeconomics, once we have studied, then we will study the 4 objectives of the government, 4 objectives of low and stable rate of inflation, low unemployment, high growth, and equity in the distribution of income. ये पढ़ेंगे. इसके बाद there are 2 tools that the government has to control these 4 things. One is monetary policy, one is fiscal policy. In the objective of high growth, there is a topic of banks that influence the economy. Topic banks के recapitalization से linked, there is a topic called capital markets. और ये पढ़ने के बाद हमने अभी पढ़ा है टिल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. तो आज ये पूरा सब कुछ, एवरीथिंग दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड विल बी रिवाइज्ड इन 3 hours बाय यू. ठीक है, आपका काम है मेरे को सिर्फ क्वेश्चंस पूछने. मेरा काम आज आसान है, आज आपको मुझे पढ़ाना है. ठीक है, आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस एंड यू विल आंसर. चैट विल बी केप्ट प्राइवेट ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो एक दूसरे के मैसेजेस से. बट आई विल रीड एवरी सिंगल मैसेज यू राइट टू सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड. सब कुछ रिवाइज करेंगे 3 घंटे में. एवरीथिंग 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 मीन्स एवरीथिंग. इससे पहले एक अनाउंसमेंट बस मैं कर दूं बिफोर आई start with this revision. The announcement is that as far as we are, same announcement I've done for foundation, I'll do here also. International organizations we are left with, agriculture we are left with, basically sectors of the economy, industries and manufacturing we are left with, and services we are left with. इसके बाद we are left with current affairs, where we have to cover economic survey and budget, and we have to cover every article that has appeared in the Indian Express or the Hindu in the past year. ये चीजें हमारी रहती हैं. The schedule for this, the schedule for covering this will be from 17th March to 23rd March. Now, if you are following the PRP schedule and the step schedule, either of them, the schedule is the same. इस टाइम पे एक्चुअली IR planned है. IR is for 2 weeks. बट हमें 2 हफ्ते चाहिए नहीं IR करने के लिए. दिस वॉज प्लान लाइक दिस ताकि हमारे पास ये 1 वीक रिजर्व हो. IR कैन बी फिनिश्ड इन 6 to 7 क्लासेस. आप समझोगे इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ सब्जेक्ट. IR प्लस इंटरनेशनल मैपिंग कैन बी डन इन 1 week. द अदर वीक ऑफ IR विल गो हेयर. तो कोई क्लैश नहीं होगा, कोई क्लास में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. दिस टाइम विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दिस. बजट इसमें आई विल बी कवरिंग टुमारो ऑन यूट्यूब. हो यूट्यूब पे रहा है, दैट डज नॉट मीन यू डोंट हैव टू अटेंड. फॉर यू इट इज लाइक अ क्लास. क्यों कर रहा हूं मैं यूट्यूब पे, ये भी बता देता हूं. पीपल हु आर गिविंग द इंटरव्यू दिस ईयर, देर आर, एज आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर, there are more than 600 students of Sarthi IAS who are giving the interview,
and we have an interview guidance program also. So some people who were not our students also wanted some guidance with regards to the interview. तो हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का ग्रुप है उसमें देर आर 1000 पीपल. ओके, 1000 इंटरव्यू गिविंग पीपल ऑफ दिस ईयर. इन लोगों को भी बजट पढ़ना है ना. सो दिस सेशन टुमारो इज फॉर एवरीवन. तो आप समझ लो कल किस लेवल की डिस्कशन होने वाली है यहाँ पर. इट इज नॉट गोइंग टू बी कि मैं आपको बजट स्पीच रीड करके दिखा दूंगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी कि मैं आपको बस स्कीम्स बता दूंगा, ये स्कीम है, ये याद कर लो, एक्सेट्रा. It is going to be a complete macroeconomic discussion of the budget. Things that you need in the interview. Of course, obviously, it will also talk about things that are going to be relevant for prelims this year, but a complete context of Indian economy. How is the Indian economy doing? तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ूंगा, जिससे मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करूंगा. फिर आई हैव रेड द कंप्लीट बजट स्पीच, आई हैव रेड द बजट एट अ ग्लांस डॉक्यूमेंट, वहां से मैं पढ़ाऊंगा. द थर्ड थिंग इज इंडियन एक्सप्रेस पे on Sunday, there was a complete supplement of 12 pages of the newspaper covering 12 thematic areas of the budget. So one area is, for example, macroeconomic stability, one area is agriculture, one area is manufacturing. तो उसमें जो भी डिस्कशन है वो सारी हम कल यहाँ करने वाले हैं. For you to understand this properly, you need to have knowledge of everything that is written on this page. तो ये हम आज रिवाइज करने वाले हैं. इसका शेड्यूल मैंने आपको बता दिया. बजट हम कल डिस्कस करेंगे. अभी तक इज एवरीथिंग क्लियर एंड आर यू रेडी? आई नो खुद से आप लोगों ने कितनी रिवीजन की होगी, मुझे पता है. चलो बढ़िया, मुझे पता है आप लोगों ने खुद से कितनी रिवीजन की होगी. तो मैंने इसके लिए क्या किया कि मैं ही आपके साथ रिवीजन करवा देता हूँ. तो अब एट 4:45 एग्जैक्टली बाय दिस वॉच, ये जो वॉच मेरे ऊपर यहाँ पे क्लॉक है, 4:45 जब स्टार्ट होंगे देन वील स्टार्ट विद द रिवीजन. ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मैं आपको क्यों दे रहा हूं अभी 4 मिनट. गेट अ नोटबुक एंड पेन आउट एंड क्लोज ऑल योर नोट्स. ब्लैंक नोटबुक और ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेन निकाल लो. क्लोज ऑल योर नोट्स. कोई भी नोट सामने खोल के मत रखो. मेरे नोट्स हो, कहीं और से आपने इकोनॉमी पढ़ाओ, वैसे तो मेरे से ही पढ़ा है आप सबको. तो जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं उन सबको बंद कर दो. आपने खुद के कुछ रनिंग नोट्स बनाए हो उनको बंद कर दो. क्लोज एवरीथिंग, क्लोज एवरीथिंग. आई वॉन्ट यू टू रिकॉल ऑन अ फ्रेश माइंड. सेकेंड इंस्ट्रक्शन, मान लो कोई गलती हो गई. गलती इन द सेंस, हो सकता है मुझे कुछ याद ना है. इट्स पॉसिबल दैट आई माइट नॉट बी एबल टू रिमेंबर समथिंग. इट्स पॉसिबल यू माइट नॉट बी एबल टू रिमेंबर समथिंग. तभी मैं चैट प्राइवेट रख रहा हूँ. गलती निकालना इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस सेशन. द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग. हमें कौन सी चीजें याद नहीं है. सो बाय द एंड ऑफ दीज 3 आवर्स वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पूरे मैट्रिक्स में हमें क्या याद नहीं है वो हमें याद आ जाएगा. देन वी नो वेयर टू, व्हेन वी आर रिवाइजिंग अगेन, हम दोबारा इकोनॉमिक्स रिवाइज कर रहे होंगे अप्रैल एंड में, राइट, व्हेन वी आर डूइंग आवर सेकंड सेट ऑफ रिवीजन फॉर प्रीलिम्स. व्हेन वी आर डूइंग दैट सेकंड सेट ऑफ रिवीजन, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नो व्हिच एरियाज वी लैक एट. उन एरियाज पे थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे, बाकी एरियाज पे थोड़ी कम मेहनत कर लेंगे. ठीक है, आई होप द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर. यू हैव 3 मिनट्स. 3 मिनट का मैं टाइमर दे रहा हूँ. चैट विल स्टे क्लोज इन दीज 3 मिनट्स. प्लीज गेट अ फ्रेश ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड अ पेन. कोई नोट्स नहीं, सब बंद कर दो. रिमूव एवरीथिंग एल्स फ्रॉम योर टेबल. 2 ही मिनट्स रह गए हैं. चलो कोई नहीं, 3 मिनट्स लेते हैं. यू हैव 3 मिनट्स. गेट एवरीथिंग आउट. 3 मिनट बाद हम स्टार्ट कर देंगे. कंप्लीट फोकस आई वांट इन द सेशन. कोई भी इधर उधर की बात आप नहीं करोगे. कोई चैट में सभी प्राइवेट रख रहा हूँ ताकि आप डिस्ट्रैक्ट भी ना हो. कोई कुछ बोल रहा है ना. आपकी चैट इंटरेस्टिंग बहुत होती है, बट थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो यू हैव दिस टाइम. प्लीज गेट अ नोटबुक आउट. जब ये टाइमर खत्म हो जाएगा आई विल स्टार्ट विद द रिवीजन.
तैयार हो? आई होप यू आर ऑल रेडी. चलिए लेट्स स्टार्ट. Chat is on. Chat will be private. रेडी? चलो लेट्स गो. स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से. माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वी मेड अ डायग्राम कॉल्ड द स्केर्सिटी डायग्राम. देयर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. व्हाट ऑल डज दिस लीड टू? बताओ. व्हाट डज दिस लीड टू? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस लीड्स टू व्हाट? क्या क्या आएगा इस डायग्राम में? अब व्हाट ऑल शुड आई राइट हियर? बताओ. गुड, वी विल राइट चॉइस. आप ही बताओगे, मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं. देयर इज चॉइस. चॉइस लीड्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वेरी गुड. और क्या क्या होगा इसमें? व्हाट एल्स इज नेसेसरी? एफिशिएंसी इज नेसेसरी. गुड. एफिशिएंसी दो तरह की होती है, एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. और क्या क्या होगा यहाँ पर? रैशनिंग इज नेसेसरी. वेरी गुड. रैशनिंग के बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं. वन सिस्टम इज प्राइस बेस्ड रैशनिंग, वन सिस्टम इज नॉन प्राइस बेस्ड रैशनिंग. गुड. आगे बताओ. व्हाट एल्स डू आई हैव टू राइट हियर? सस्टेनेबिलिटी इज नेसेसरी. गुड. सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. हाउ डू आई डिफाइन सस्टेनेबिलिटी? देयर शुड नॉट बी एनी डिक्लाइन इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओवर time so that there is equity over generations. है ना? यही पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में. दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विद. ठीक है. सेकंड चीज हमने पढ़ी थी यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज व्हाट? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइंड एज? डिफाइन कैसे करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेफ्ट आउट. इस पे हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था. कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री बाय द गवर्नमेंट. तो फ्री से याद कर लेते हैं हम. फ्री गुड्स एंड फ्री ऑफ चार्ज गुड्स. फ्री गुड्स क्या होते हैं और फ्री ऑफ चार्ज गुड्स क्या होते हैं? बताओ. फ्री ऑफ चार्ज इज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, या आपको फ्री में मिल रहे हैं. दे आर स्टिल स्केर्स. यहां पर स्केर्सिटी है, बस आपको पे नहीं करना. यू आर नॉट हैविंग टू पे फॉर देम. दे आर स्केर्स बट यू डोंट हैव टू पे. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट गिव्स फ्री एजुकेशन. कमोडिटी प्रोवाइडेड फ्री बाय द गवर्नमेंट. फ्री ऑफ चार्ज ये हो गया. फ्री गुड्स कौन से होते हैं? देयर इज नो स्केर्सिटी. इन गुड्स की कोई स्केर्सिटी ही नहीं है. जैसे कि एयर. एयर फॉर एग्जाम्पल इज अ फ्री गुड. ठीक है. अब हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा था यहां पर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी अंडरस्टूड वाज कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन दैट आई डिराइव. यूटिलिटी से कुछ वेरिएशंस पढ़ी थी. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी का एक लॉ था. व्हाट वाज दैट लॉ? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? व्हाट इज दैट लॉ? डिमिनिशिंग. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओवर टाइम मार्जिनल यूटिलिटी विल गेट डिमिनिश्ड. इसका एक ग्राफ टाइप भी देखा था, नोट्स में था हमारे. राइट. टोटल यूटिलिटी ऐसे जा रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे जा रहा था. राइट. इस टाइप का कुछ ग्राफ भी देखा था टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का. आइसक्रीम का एग्जांपल देखा था. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो हैड सम एक्सेप्शंस. एक दो एक्सेप्शंस बताओ इस लॉ की. व्हाट वर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ? सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ. कुछ एक्सेप्शंस बताओ.
मनी, पावर, माइजर, हॉबीज, गुड। मनी, पावर, माइजर, हॉबीज, इस टाइप की कुछ एक्सेप्शंस भी थी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने क्या पढ़ा था? समथिंग कॉल्ड द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, what and how to produce, how much to produce. Third question was how to distribute, ये पढ़ा था। इसको कैसे आंसर करते हैं? what are the two different systems to answer this problem now? कैसे आंसर करते हैं इसको? there were two ways to answer this problem that led to two economic structures. One was free market economics, one was command and control economy. इसके बीच में क्या होता है जो एक्चुअल रियलिटी है ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड? मिक्स्ड इकोनॉमीज। हाउ डज फ्री मार्केट आंसर दिस क्वेश्चन? फ्री मार्केट कैसे आंसर करता है और ये कैसे आंसर करता है, ये बताओ। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर? फ्री मार्केट में द प्राइस डिसाइड्स, प्राइस डिसाइड्स, मार्केट ऑपरेट्स ऑन द फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड, होल्ड ऑन 1 सेकेंड। हेलो, sorry about that, sorry about that. प्राइस डिसाइड्स वर्सेस क्या, यहां पर क्या था? कमांड एंड कंट्रोल में हु डिसाइड्स? गवर्नमेंट डिसाइड्स। रैशनिंग सिस्टम हियर विल बी नॉन प्राइस बेस्ड। इसका एग्जांपल दिया था आईआईटी की सीट्स या यूपीएससी की सीट्स, नॉन प्राइस रैशनिंग सिस्टम। यहां पर प्राइस डिसाइड्स। मिक्स्ड इकोनॉमी, एक्चुअल रियलिटी। वी हैव बोथ। रिसोर्स ओनरशिप के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया था, है ना, और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था, राशनिंग सिस्टम के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था इन इकोनॉमीज को, राइट? हाउ दिस हैपेंड, बट एक्चुअली इफ वी लुक एट इट, ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? वी रेड नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज लैंड? लैंड इन इकोनॉमिक्स इज, लैंड इन इकोनॉमिक्स इज एनीथिंग दैट इज नेचुरल। कुछ भी जो नेचुरल है वो लैंड है। गिफ्ट्स ऑफ नेचर, सो इवन थिंग्स लाइक wheat is included in land. Something that is growing under the sea is also included in land. Labor, labor कैसे डिसाइड किया था? ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना? ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बोथ फिजिकल वर्क एंड इंटेलेक्चुअल वर्क। फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क ऑफ ह्यूमंस इज लेबर। थर्ड डिसाइड किया था कैपिटल। कैपिटल आर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। इस पे अभी आते हैं, यहां पर अभी और डिस्कशन रहती है। लास्ट हमने डिसाइड किया था एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल इज नॉट मनी, है ना? लास्ट डिसाइड किया था एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आता है? समवन विलिंग टू टेक द रिस्क टू ऑर्गेनाइज द अदर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब कैपिटल की थोड़ी सी और डिस्कशन है, वो कर लेते हैं। कैपिटल में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन कैपिटल? कैपिटल इज एक्चुअली अ वर्ड मीनिंग फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स। ऐसा कुछ देखा था, फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स। कौन कौन से टाइप ऑफ कैपिटल देखे थे? नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल। दिस इज मनी। फाइनेंशियल कैपिटल इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। और कौन कौन सा टाइप ऑफ कैपिटल देखे थे? सोशल कैपिटल देखा था। सोशल कैपिटल इज ट्रस्ट एंड हार्मनी। सोशल कैपिटल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा था हमने, याद आ रहा है कुछ? देयर वाज वन लास्ट टाइप ऑफ कैपिटल लेफ्ट, फिजिकल कैपिटल, एक्चुअल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। ये देखा था। अब क्या देखा था इसके बाद? व्हाट आर द रिटर्न्स दैट यू गेट? व्हाट इज द रिटर्न ऑन लैंड?
रिटर्न ऑन लैंड इज वेजेस, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, रेंट. रिटर्न ऑन लेबर इज वेजेस. रिटर्न ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योरशिप्स गेट प्रॉफिट. यही पढ़ा था. उसके बाद ये डिस्कशन करने के बाद हमने क्या देखा, हम सबका फेवरेट टॉपिक समझाने में इतना टाइम लगा था जिसको, फर्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ इन आवर डिस्कशन ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व में क्या क्या याद करना है हमें. व्हाई इज द शेप लाइक दिस, पूजा's फर्म. आई होप पूजा इज अटेंडिंग दिस क्लास. उनके बेसिस पे मैंने पूरा कर्व पढ़ाया था, है ना. शेप ऐसी क्यों है, क्या शेप ऐसी भी हो सकती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व की. इस शेप का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शेप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शेप, ये देखा था. फिर क्या देखा था हमने इसके बाद, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू आर इनसाइड द कर्व वर्सेस व्हेन यू आर ऑन द कर्व. हाउ डू यू गो फ्रॉम हियर टू हियर. सो टू बी ऑन द कर्व, टू बी ऑन पीपीसी, there are certain conditions to be fulfilled. What conditions have to be fulfilled, ये बताओ. Efficiency of resources, full employment of resources, full efficiency of resources. याद करो हमने देखा था iPhones and motorbikes, इस बेसिस पे देखा था. Squares and circles, इस बेसिस पे देखा था. याद आ रहा है ये. These are the conditions we have to fulfill on to be on the PPC. If I want to move the PPC outward, मैं इसे ऐसा बना दूं, तो मुझे क्या करना होगा, to make from for this yellow movement, what will I have to do. There are three things I can do to improve this PPC, to move it outward. Good. Quality of resources, quantity of resources, technology. ये देखा था. शेप ऐसी क्यों है, बिकॉज यहां पर it is impossible to move from one point to the other point without giving up something. So this PPC itself demonstrated a lot of economic concepts. This PPC can demonstrate scarcity. This PPC can demonstrate choice. This PPC can demonstrate opportunity cost. ये देखा था, है ना. ऐसी शेप कब होगी, when the opportunity cost is fixed. CAPF में 6-7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ये पढ़ा था हमने. उसके बाद शिफ्ट इन पीपीसी देखे थे. इससे रिलेटेड अब रियल इकोनॉमी में, जिसमें मेंस पे क्वेश्चन भी आया इन 2020, कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था. इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट देखा था कॉल्ड, आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर, मैं चैट नहीं देख रहा हूं आपकी. पोटेंशियल जीडीपी, इंडियाज पोटेंशियल जीडीपी, फैक्टर्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, हाउ पोटेंशियल जीडीपी कैन बी इंप्रूव्ड. इसमें वेरियस केसेस ऑफ पीपीपी देखे थे, समझा था पीपीपी कैसे वर्क करता है. पोटेंशियल जीडीपी पढ़ा था. इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यहीं से यहीं लिख देते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बीच में डिफरेंस. ग्रोथ वाज एन इकोनॉमिक पैरामीटर, डेवलपमेंट वाज मोर होलिस्टिक, इट वाज गोइंग बियॉन्ड जीडीपी, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा. ठीक है. अब इसके आगे क्या देखा था, इसके आगे 2 लॉज देखे थे. 2 लॉज वी सॉ. सस्टेनेबिलिटी तो वहां लिख लिया ना. 2 laws, the 2 fundamental laws of economics. Law of demand. What was law of demand? Quantity demanded is inversely proportional to price. यही था क्या law of demand, या इसमें कुछ दिक्कत है. वो is some problem there, या कुछ और लिखना है यहाँ पे. Anyone add ceteris paribus. Very good. At everything else remaining same, at ceteris paribus. ठीक है. डिमांड का मतलब क्या होता है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज. विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों फैक्टर्स थे. डिमांड का ग्राफ कैसा बनता था, डिमांड कर्व. दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई की क्या कंडीशन है, क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस एट ceteris paribus. How was the supply curve made? इसके उल्टा सप्लाई कर्व.
अब इसके बाद क्या पढ़ा था, इनके डिटर्मिनेंट्स, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बताओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या हैं? प्राइस इज ऑब्वियसली वन डिटर्मिनेंट, इनकम इज वन डिटर्मिनेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज वन डिटर्मिनेंट, आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था यहां पर भी, सीजन इज वन डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, क्वेश्चन आ चुका है ये प्राइस ऑफ अदर गुड्स पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। और क्या क्या डिटर्मिनेंट्स थे? एक्सपेक्टेशन, वेरी गुड, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। और क्या क्या क्वेश्चन थे? साइज ऑफ मार्केट, वेरी गुड, ये डिटर्मिनेंट्स थे डिमांड के। अब कैसे डिटरमाइन होती है डिमांड? इसमें से प्राइस में क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व, बाकी सब पे क्या होगा, मूवमेंट या शिफ्ट ऑफ कर्व, शिफ्ट ऑफ कंप्लीट कर्व, यही हमने देखा था, है ना। इनकम के साथ कैसे होता है? इनकम पे डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ गुड, नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा था इनकम इलास्टिसिटी से रिलेटेड? इसमें कुछ था, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इस टाइप के कुछ गुड्स पढ़े थे इनकम के साथ। फिर पढ़ा था प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स में कुछ देखा था, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल जैम एंड बटर, कॉम्प्लीमेंट गुड्स कंज्यूम टुगेदर, किंडल्स एंड ई बुक्स, ब्रेड एंड बटर, इनका रिलेशनशिप देखा था सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स का। अब ये आपको याद होना चाहिए, दिस आई विल नॉट गो इनटू दिस एक्सप्लेनेशन अगेन, दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई होप यू नो दिस। बाकी भी सारे देखे थे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से क्या होता है, सीजन से क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस से क्या होता है, साइज ऑफ मार्केट से क्या होता है, सब में शिफ्ट ऑफ कर्व होता था, ठीक है। फिर यहीं से हमने वी डाइवर्ज्ड अ बिट एंड वी स्टडीड टाइप्स ऑफ गुड्स। दो टाइप्स तो हमने देख लिए, इंफीरियर गुड एंड नॉर्मल गुड। एक टाइप हमने और देखा, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट गुड। और कौन कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे हमने? बेस्ड ऑन शेप ऑफ डिमांड कर्व, याद करो ना पहले, शेप ऑफ डिमांड कर्व, एक ऐसा है, एक ऐसा है, नेसेसरी गुड, लग्जरी गुड, देन सम टाइप ऑफ गुड्स दैट आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, Veblen goods, what does the graph look like? This. Giffen goods, इसमें भी ग्राफ looks like this, है ना। फर्क क्या था? Veblen मतलब बढ़िया, वधिया, गुड, these were luxury goods. Thorsten Veblen in his book Theory of the Leisure Class, luxury goods, हैंडबैग का एग्जांपल लिया था, LV का हैंडबैग। Giffen goods, घटिया, बैड गुड्स, इंफीरियर गुड्स, एग्जाम्पल लिया था कंपेयर करने का, व्हीट एंड बाजरा। टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे 4। फिर यहीं से हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटीज। डिमांड से रिलेटेड कितनी इलास्टिसिटीज देखी थी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, TED। फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी? इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये 5 पॉसिबिलिटीज थी। परफेक्टली इनइलास्टिक, ग्राफ लुक्स लाइक आई, ग्राफ सारे हम बना चुके हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ग्राफ लुक्स लाइक ई। इलास्टिक वाज नॉर्मल, जब स्लोप 1 होगी ग्राफ की, ऐसा ग्राफ दिखेगा। relatively inelastic does not respond to price, relatively elastic responds too much to price. Price elasticity of demand का फॉर्मूला
या किसी भी इलास्टिसिटी पढ़ने के लिए फॉर्मूला PED was equal to delta Q, change in quantity in percentage terms divided by change in price in percentage terms. फिर देखी थी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज विद इनकम्स। याद करो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किस टाइप के गुड्स थे? दिस इज change in quantity demanded by change in income. We have read these goods, normal goods, inferior goods. normal में भी luxury goods and necessary goods. ऐसे क्लासिफाई याद करना है आपने, पहले इंफीरियर और नॉर्मल, इंफीरियर और नॉर्मल, और फिर एक नॉर्मल में भी लग्जरी और नेसेसरी। तो यहां पर हमने एक ऐसी लाइन बनाई थी, वी हैड मेड वन स्ट्रेट लाइन टू डेमोन्स्ट्रेट दिस इफेक्ट। This was 0. This is inferior goods. Inferior goods have negative income elasticity of demand. Then normal goods. Normal में necessary and luxury. Necessary की between 0 and 1, luxury की more than 1. ऐसा कुछ पढ़ा था? फिर हमने पढ़ी थी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें अगेन दो गुड्स पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गोज अप, price of substitute goes up, butter becomes more expensive, people will buy jam, quantity demanded goes up. Complement goods, bread becomes more expensive, people will buy less of jam, so price goes up of complement, quantity demanded goes down. यही पढ़ा था, इसके ग्राफ्स भी बनाए थे। फिर नेक्स्ट लॉ, लेट्स कम बैक टू प्रीवियस लॉ जो हम यहां पर देख रहे थे, लॉ ऑफ सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, quantity supplied is directly proportional to price at ceteris paribus. इसकी कुछ कंडीशंस देखी थी, या रादर डिटर्मिनेंट्स देखे थे ऑफ सप्लाई। व्हाट वर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई? क्या डिटर्मिनेंट्स थे लॉ ऑफ सप्लाई के? एक तो ऑब्वियसली प्राइस होगा, प्राइस विल कॉज मूवमेंट अलोंग द कर्व। बाकी क्या क्या थे? which will cause shift of curve. Good. Cost of factors of production, related goods, but कहां से related goods? Related goods in supply. और क्या क्या था? What else was there? State of technology, expectations of producers. इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। कौन सी दो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस थी? टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इनसे क्या इंपैक्ट होता है ये हमने देखा था। सिमिलरली एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी देखी थी, कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें भी सेम चीज बनेगी, relatively inelastic, elastic, relatively elastic, then two exceptions which is perfectly elastic, perfectly inelastic. perfectly inelastic में स्टेडियम का एग्जांपल लिया था, perfectly elastic में एक्सचेंज का एग्जांपल लिया था, एक्सचेंज कियोस्क। इनके ग्राफ्स बना के देखे थे, इन तीनों के लिए एक पिज्जा शॉप का एग्जांपल लिया था, है ना। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, डन। ठीक है, फिर क्या किया था? वी ब्रॉट द टू ग्राफ्स टुगेदर। सेकेंड फंडामेंटल ग्राफ ऑफ इकोनॉमिक्स, द माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, डिमांड ऑफ अ गुड, सप्लाई ऑफ अ गुड। यहां लिखूंगा मार्केट फॉर गुड, मार्केट फॉर आईफोन्स लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, मार्केट फॉर आईफोन्स, प्राइस ऑफ आईफोन्स, क्वांटिटी ऑफ आईफोन्स। यहां पर वेरियस चीजें करके देखी थी। इफ आई इंक्रीज टैक्स and consumers think product is lame, what will happen? What will happen if I increase tax? Supply curve will move inward, price will increase, quantity will decrease, है ना। Similarly, if consumers think it is lame,
demand curve will move inside. Same effects we can calculate. है ना, we can calculate the both effects in this case. करेक्ट. ऐसे करके हमने सारे इफेक्ट्स देखे थे कैसे, हाउ दे वर्क. अब when we look at the equilibrium condition, जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, यहां पे हमने क्या देखा था, प्रेशर, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व. फॉर सम रीजन मार्केट इज ऑपरेटिंग हियर, for some reason market is operating here, there will be a downward pressure on the price. For some reason market is operating here, there will be upward pressure on the price. This upward and downward pressure, this was invisible hand of the market, the theory of Adam Smith. Market automatically brings you back to this point, invisible hand of the market, है ना. अब इनकी शिफ्ट करा के देखे थे, शिफ्ट होगा क्या होगा डिमांड सप्लाई कर्व में. फिर यहां पर हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था विद रिगार्ड्स टू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, हु बेयर्स द बर्डन, ये पढ़ा था, हु बेयर्स द बर्डन. ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व. इफ आई डू टैक्सेशन, सप्लाई कर्व बिकम्स लाइक दिस. हाउ डू आई चेक हु इज पेइंग हाउ मच, व्हाट डू आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व. फर्स्ट केस. सेकेंड केस में हाउ दिस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, हाउ मच टैक्स मनी डज द गवर्नमेंट गेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहां पर ये बना के देखा था, हु इज बेयरिंग द बर्डन, टैक्स पेयर कितना पे करता है, कितना गवर्नमेंट को कितना मिला, कंज्यूमर्स को कितना मिला, प्रोड्यूसर्स को कितना मिला. ये सारी बात हमने करी थी, राइट. ये याद होगा आपको, है ना. वी कैलकुलेटेड द फॉर्मूलाज हियर आल्सो. फिर इसी से रिलेटेड एक चीज और पढ़ी थी, कॉल्ड प्राइस कंट्रोल्स. प्राइस कंट्रोल्स, प्राइस कंट्रोल्स में क्या पढ़ा था, two types of price control can be there. On this graph I can have two types of price control. First type of price control is this, I will not let the price rise above this level, known as price ceiling. Price ceiling में quantity demanded was more than quantity supplied, leading to what, price ceiling led to what, led to shortage, led to shortage in the economy. For this shortage, what did the government have to do? Shortage से अब क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट विल हैव टू गिव सब्सिडी. एग्जाम्पल देखा था प्रधानमंत्री आवास योजना, government providing subsidy. Second type of intervention here was price floor. I will not let the price fall below this point. At price floor, quantity supplied was more than quantity demanded. Price floor created a excess, surplus. Government will have to procure itself, buy itself, known as procurement. known, यहां पर क्या एग्जाम्पल देखा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इस पे भी क्वेश्चंस देखे थे, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग पे. नेक्स्ट ऑन लास्ट कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, last concept in microeconomics was the concept of externalities. Differentiating between private utility and social utility. If there is a negative externality of consumption, this is private utility. Lesser is social utility. Social utility is lesser. This is supply. Free market will operate at this point. QS is equal to QD, so quantity of the free market. This is quantity that is socially optimal. Overproduction was happening. Government now has to stop this overproduction. Government needs to tax this good. Move this inside, then get close to this point. This tax was called what? ऐसे टैक्स का नाम क्या रखते हैं हम? What is this tax called? Pigovian tax, named after Sir Arthur Pigou. Pigovian tax. Example था इसका cigarettes. ठीक है,
सेकंड कुड बी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ कंजम्पशन. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ कंजम्पशन में उल्टा हो जाएगा ग्राफ. What will the graph look like when there is positive externality of consumption? Private utility representing demand curve, social utility representing demand curve, supply. This is quantity of free market. This is quantity that is socially optimal. Government will have to give subsidy to move the supply curve here. When government moves supply curve here, gives subsidy, then we reach to close to quantity which is socially optimal. Example देखा था आयुष्मान भारत. मेंस का क्वेश्चन भी देखा था. Prevent marketization. This year means question only. Government must prevent marketization of healthcare. This exact concept was illustrated there. ऐसे ही नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन भी देखी थी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन भी देखी थी. इन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल ऑफ पेंट वी हैड सीन. पेंट फैक्ट्री लीडिंग टू कार्बन इमिशन. यहां पर एक, ऑल्दो मैं आपको ये एनवायरनमेंट में पढ़ाऊंगा, कार्बन मार्केट्स एग्जाम्पल देखा था. इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में 2023 में. सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन हैड आल्सो कम, सोशल कैपिटल हैड आल्सो कम, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज टू द स्टेट, दैट हैड आल्सो कम. वी हैड अंडरस्टूड बाय मेकिंग दैट टैक्स डायग्राम, है ना, ये भी हमने पढ़ा था, राइट. अब लास्टली वी अंडरस्टूड वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट. मार्केट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट पावर, ability of firms to influence the market. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट पावर में क्या पढ़ा था? वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या imperfect competition, where there was brand loyalty, firms had some market power. Then we read the concept of oligopoly. यहां पर we read something called Herfindahl index, Herfindahl-Hirschman index और concentration ratio. Oligopoly में क्या होता है? Tendency of collusion, tendency of price war, tendency of cartelization. ऐसे cartelization can be implicit and explicit. Explicit cartelization का example देखा था OPEC. Lastly we saw monopoly, complete market power in the hand of some firms. यहाँ पर हमने barriers to entry का भी example देखा था. When market is not perfect competition, when market is like this, there is market power, this leads to inefficiency, this does not help the consumers or the producers, so there needs to be government regulation to stop this. यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वेरियस गाइडलाइंस दैट दे हैव गिवन. एग्जाम्पल भी देखा था इसका, मीन्स का क्वेश्चन भी देखा था, व्हाट्सएप वाला केस भी देखा था, है ना. अब हमने क्या देखा था इसके बाद? टाइप्स ऑफ गुड्स में कुछ और डिवीजन. टाइप्स ऑफ गुड्स, प्राइवेट गुड्स वर्सेस पब्लिक गुड्स. फ्री मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड फॉर पब्लिक गुड्स. Who has to intervene? Government has to intervene. Citizens give a tribute to the government. Citizens give a tribute to the government known as tax. Government collects tax and provides public goods. Correct? ये देखा था फ्री राइडर प्रॉब्लम, लाइट हाउस प्रॉब्लम या फ्री राइडर प्रॉब्लम, ये चीज देखी थी यहां पर. Then another type of good we saw was intermediate versus final goods. Final goods में भी various consumer goods and capital goods. Consumer goods में भी consumer durable, consumer non-durable. Intermediate goods, ingredients in the production process, ingredients. Final goods, they are consumed as such. Capital goods, assistance in the production process. Consumer goods, what we finally consume. Consumer durables, they have short lifespan. Durables have long lifespan. Durable, long time durable. Non-durables, short lifespan.
ये देखा था, है ना? कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डन, टाइम लगा 30 मिनट्स। मैं लिख भी रहा हूं साथ में अलॉन्ग साइड, 30 मिनट्स। 45 पे स्टार्ट किया था ना, 35 मिनट्स। डन विद पार्ट 1, डन। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बनाया था पहले। चेंज द सेम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एंटायर इकोनॉमी। दिस कर्व नोन एज माय फेवरेट एग्रीगेट डिमांड कर्व, दिस कर्व नोन एज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। यहां पर क्या लिखूं? प्राइस लेवल्स इन द इकोनॉमी। यहां पर क्या लिखूं? आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी नोन एज जीडीपी। मैक्रो इकोनॉमिक लैंग्वेज भी सीखी थी। रिसेशन, fall in aggregate demand, inflation, rise in price levels, ऐसा कुछ पढ़ा था। यहां से हम गए थे टू दिस मॉडल। नाउ ड्रॉ दिस मॉडल विद मी, draw this model with me known as circular flow of income model. There are households in the economy, there are firms in the economy. Households provide factors of production, firms give wages, interest, profit and rent. This is known as factor market. Then other thing is goods market. Firms provide good and services, household provide payments or expenditure. This was two factor, this was two factor. यहां पर क्या हो रहा था? कंडीशन ऑफ, चार्ट में ही देखा मैंने, वेरी गुड, कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर हमने और फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए। देयर वाज वन एक्स्ट्रा प्लेयर नोन एज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वुड कलेक्ट टैक्स, tax would be collected by the government, government would collect tax and government would spend on public goods. So government spending. One other player here was banks. Banks were leading to certain savings of the economy happening, and banks were also giving investment back to the economy. One third factor here was international markets. International markets. In international market, what was happening? When we import goods, money goes out. So imports. When we export goods, money comes back in. Exports. These three green arrows, they are injections into the circular flow. Red arrows are leakages from the circular flow, injections and leakages. New condition is condition of dynamic equilibrium. Now, if I want to measure national income, I can count any of three things. I can count one, the incomes that households make here, this arrow, incomes, income method of measuring national income, wages, interest, profit and rent. I can count provision of goods and services, so production method of measuring national income. Third was this above arrow known as expenditure method. Because of dynamic equilibrium condition, income is equal to expenditure equal to production. ये हमने देखा था. What was the problem? That was in this model there was a certain problem जिस पे मेंस में क्वेश्चन भी आया है. We read about the work of economist K. Travers. What did she say? She said that this is only income oriented economy. You are not talking of non-economic factors. You are not talking of care economy. You should talk of embedded economy.
embedded into nature, looking at care economy, model of very good donut economics. बुक का नाम था डोनट इकोनॉमिक्स, हाउ टू थिंक लाइक अ 21st सेंचुरी इकोनॉमिस्ट. पढ़ना अगर कभी टाइम मिले तो, बहुत ही शानदार किताब है. ठीक है. From here we understood the first core concept of macroeconomics called aggregate demand equal to C plus I plus G plus X minus M. How did we derive it? Consumption was equal to consumption domestic plus consumption foreign. Investment equal to investment domestic plus investment foreign. Government spending equal to government spending on domestic plus government spending on foreign goods. And exports. When we add all of this, we can say C plus I plus G plus X minus consumption domestic minus consumption foreign, investment foreign, and government spending on foreign items, together known as imports. Coming to this formula, C plus I plus G plus X minus M. Then we read determinants. Determinants of aggregate demand. Determinants of aggregate demand में consumption के determinants क्या क्या हैं अब बताओ आप, ये आपको याद होना चाहिए. Consumption के what are the determinants of consumption? Taxes, very good. What else? Consumer confidence, interest rates, fiscal policy, monetary policy. What else? Changes in wealth, good. Consumer confidence, level of household indebtedness. ठीक है. अब मैं क्यों कह रहा हूं ये रिवाइज करना जरूरी है. इंडियन इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, सुनो जरा ध्यान से एक मिनट. इंडियन इकोनॉमी का अभी क्या कॉन्टेक्स्ट है? ग्रोथ रेट वाज स्लोइंग. Growth rate was slowing. India is largely consumption driven economy. Growth rate of the economy was slowing. What did government need to do? Government needed to increase the consumption levels. One way to increase consumption levels is reduce the tax. Logic of new tax regime. No tax to be paid up till 12 lakh rupees. 12 lakh rupees of income, no tax to be paid. समझ आया? ये मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूं. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द बजट. तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबको समझना. ठीक है. अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगेन लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, levels of corporate tax. What else? Again, interest rates, business confidence in the economy, level of indebtedness, expectations of future. यहां पर एक wealth लिख लिया है. ठीक है. Level of national income also. Other things are government spending, exports, imports. Components of aggregate supply, combining all the supply curves of the economy. What are the determinants of aggregate supply? Determinants of aggregate supply: taxation, indirect tax, subsidy, indirect subsidy or directly given subsidy on production, cost of raw materials, और क्या था? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स में ही कॉस्ट ऑफ वेजेस आ जाएगा ना यार, वेजेस तो इसमें इंक्लूडेड है. और क्या क्या था? देयर वाज वन मोर थिंग, चेंज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, केस ऑफ सप्लाई शॉक, कोविड आ गया, लीडिंग टू चेंजेस इन एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन टू वेज, short run aggregate supply and long run aggregate supply. Short run aggregate supply is when we assume that change in price levels do not impact cost of factors of production. Short run aggregate supply curve. Long run aggregate supply curve, change in price levels will impact cost of factors of production. Long run aggregate supply curve looks like this.
not dependent on price levels. And what was this output level? Y is equal to potential GDP. फिर आए थे हम to the actual macroeconomic equilibrium. Three concepts to be studied on the same graph: aggregate demand, aggregate supply. When aggregate demand will improve or increase, it will get here. What happens now? Price levels go up, so inflation happens. Output increases, so GDP growth happens. When output increases, firms employ more people, so employment increases, or rather we can write unemployment goes down. यहीं से एक linkage between inflation and unemployment known as Phillips curve. When inflation will go up, unemployment will come down, known as Phillips curve. Inflation unemployment relationship. इसी कर्व में अब अगर मैं एक इंट्रोड्यूस कर दूं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, LRAS, this level of output known as potential GDP, this level of unemployment was known as natural rate of unemployment. Natural rate, also known as non-accelerating inflationary rate of unemployment, है ना? अब इसमें if the economy is operating here, I will call this an inflationary gap. If the economy is operating here, I will call this a deflationary or recessionary gap. In recessionary gap, level of unemployment will be more than natural rate. In inflationary gap, unemployment will be less than natural rate. And it is not possible to function here in the long run. In the long run, you will get back to this, known as long run aggregate supply curve. है ना? इसी ये पढ़ने के बाद we read a concept called national income accounting. National में पॉलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, डेफिनेशन ऑफ स्टेट. व्हाट इज स्टेट? 4 factors: STPG, sovereignty, territory, population, government. These 4 factors are there, only then it will be called state. STPG. ठीक है? Character. Second word was income. When do I call anything income? When factors of production have been exchanged for it. What was the other type of payment? Transfer payment. Accounting, a system of accounts. A system of accounts. यहां पर हमने डिटेल में फिर देखा था, यहां पर हमने दोबारा से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल देखा था डिटेल में. There were 3 methods. Income method equal to expenditure equal to production. In the income method, what could I do? Just calculate the incomes of household: wages, interest, profit, rent. Expenditure method, just calculate 4 components of aggregate demand: C, I, G, and net exports, or X minus M. Production method, I only have to calculate the value of final goods and services. So the method I was using here was GVA method, gross value added, value output minus value input. GVA method, ये पढ़ा था हमने. Then from here we made a linkage between savings and investment. From this we calculated that factor, that there is a linkage between savings and investment. What does investment depend on? Future expectations and price of money known as interest rate. ये हमने देखा था. What was the formula to derive this? We wrote C. Anyway, चलो ये formula is not that important for you. It was a savings investment identity. What लिख ही लेते हैं चलो. Consumption plus savings plus tax is equal to C plus I plus G plus X minus M. Consumption got cancelled. Savings minus investment was equal to G minus T plus X minus M. ये डेरिवेशन हमने की थी कि सेविंग्स रेट इन द इकोनॉमी लिंक टू दिस, बट सेविंग्स रेट इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड विद इन्वेस्टमेंट.
प्रोडक्शन मेथड में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. Why final goods and services produced? Because this is how we defined something called GDP. GDP नाम का जो टर्म है उसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं. GDP known as gross domestic product. What is definition of gross domestic product? Value. So only things that can be valued will be counted of final. So no intermediate goods. Goods and services. So both goods and services have to be counted. Produced, only production matters, not actual sale in an economy in a given time period. This time period is usually 1 year. We define GDP like this. When we were counting GDP, we also came across a new concept called GNP. What was the difference between GDP and GNP? We differentiated GDP in the economic territory of India. इकोनॉमिक टेरिटरी. यहां पर हमने पढ़ा था व्हाट विल हैपन टू एम्बेसीज ऑफ इंडिया अब्रॉड आर इंडियाज इकोनॉमिक टेरिटरी. यहां पर आपको मैंने एक और चीज रिवाइज कराई थी, द रेगुलेशन अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी. जीएनपी विल बी बाय इंडियन सिटीजन्स और इंडियन नेशनल्स. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओनली नेशनल्स वर काउंटेड. What was the relation between them, between these two? GNP is equal to what? GNP is equal to what? लिखो. Good. Net factor income from abroad. GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. From abroad. ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, डिराइव किया था इस रिलेशनशिप को when we were reading about investment. We read there is gross fixed capital formation. Investment में also we read a concept of change in inventory. Inventory change होगी तो उसको भी investment में काउंट करेंगे because production matters, right? अब यहाँ पर investment में हमने देखा था something called the concept of depreciation, which was an accounting exercise. So if I have to go from gross domestic product to net domestic product, what do I need to do? GDP minus depreciation was equal to net domestic product. Similarly, GNP minus depreciation is equal to net national product. ये रिलेशनशिप देखा था. अब we read various types of prices here. First we read prices on the basis of year of comparison. Price levels of this year और प्राइस लेवल्स ऑफ बेस ईयर. बेस ईयर याद करते ही हाउ टू सिलेक्ट बेस ईयर, यू आल्सो रेड. सिलेक्ट कैसे करते हैं बेस ईयर? अ ईयर दैट इज नॉट दैट इवेंटफुल ईयर. ठीक है. प्राइस लेवल्स ऑफ दिस ईयर, प्राइस लेवल्स ऑफ बेस ईयर. इफ आई कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल्स ऑफ दिस ईयर, आई विल गेट नॉमिनल जीडीपी. प्राइस लेवल्स ऑफ बेस ईयर, आई विल गेट रियल जीडीपी. कंपैरिजन ऑफ दीस टू इज डन इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टू डिफ्लेट दिस, जीडीपी डिफ्लेटर, which is a measure of inflation in the economy. ये देखा था. अब दूसरा टाइप ऑफ प्राइस लेवल्स, सेकेंड टाइप ऑफ प्राइस लेवल इज where you basically where do you see the price? Do you see it at the time of production? Let's say this was McDonald's का एग्जांपल लिया था. Price that consumers pay or price that actually factors of production get. So price at factory gate, basic price. Price that consumers pay, market price. Price that actual factors get, factor cost or factor price. Right? So factor cost is what we had seen. ये तीन हमने देखे थे. अब relationship between factor cost and basic price and market price. ये relationship we had seen. बताओ क्या relationship था? बताओ what was the relationship here? पहले क्या लिखूं? I have to add or subtract. यहां क्या लिखूं? What should I write here? Add production taxes minus production subsidies. यहां पर क्या लिखूं? Product tax
प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये चीज थी। राइट, स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ा था। इफ जीडीपी इज रिटन एट मार्केट प्राइस, if GVA is written at basic price. Then we came to actual measurement of GDP in India. Who does it? Ministry of Statistics and Program Implementation. इसका एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग था that looks at MP lads. Statistics वाले की बात करें तो there was National Statistics Office that had National Sample Survey Organization. Then there was also National Statistical Commission. National Statistical Commission का क्या काम था? This was an advisory body, the brain of this ministry. NSSO के साथ था there was Central Statistics Office. They have now been merged. They collect sample survey information. They present this data in a useful form. ये सारी चीजें पढ़ी थी, MOSPI का structure. Then we came to actual measurement of GDP in India. What changed in India's GDP measurement in 2015? क्या क्या changes हुए 2015 में? We moved from production method to GVA method. We got a new database. From annual survey of industries data, we came to MCA 21 database, Ministry of Corporate Affairs. Change in base year. Most recent base year was selected. 2011-12 was selected as the base year. Then headline growth would be measured as GDP at market prices. Sectoral, obviously in real terms. So at constant market price. Then sectoral estimates were done in GVA at basic price. What were the other minor changes that we looked at? Financial sector data also. We looked at local government data also. So it is a much better, more representative sample than what annual survey of industries was. Why did we have to do all of these changes? We had to do all of these changes because we had to be compliant to system of national accounts made by IMF UN. New update is expected this year. So very important for this year, all of these changes. Then we read one main topic, GDP as a relation to an indicator of economic well-being. क्या GDP economic well-being का indicator है या नहीं है? There were some issues. We came up with concept of national economic welfare or new concept of green GDP to make this a more accurate estimate. Right? Then we came to final part of GDP to get from one place to the other. So GNP, say we went to net national product at market price. Then we went to net national product at factor cost. We removed the effect of taxes and subsidies. Net national product at factor cost is national income of India. Right? From here we had to get to personal income. पर्सनल इनकम के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? What all do I have to remove and what all do I have to add? I have to remove corporate tax, undistributed profits. I have to remove net interest payment paid by households, but I have to add transfers to get to personal income. From personal income I have to get to personal disposable income. What do I have to remove here? Income tax and miscellaneous fines. ये याद है? टेबल पढ़ा था हमने एक. Last concept in GDP was incremental capital output ratio. Amount of capital for amount of output. What is good for the economy? Low ICOR is good for the economy. Second topic done. Macroeconomics also done. अच्छा आप जेन्युइनली बताओ यार, 2 टॉपिक हो गए, हेल्प हो रही है? हेल्प हो रही है या नहीं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना मैं खुद को पढ़ा रहा हूं बस.
ठीक है, इंटेंस हो रहा है, मेरे लिए भी इंटेंस हो रहा है, मुझे तो बोलना भी है यार, इट इज गेटिंग इंटेंस फॉर मी ऑल्सो, बट गुड दैट यू आर सेइंग दैट इट्स हेल्पिंग यू। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने पीआरपी वालों को रिवाइज कराया था, थोड़ा जल्दी करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट उतना कुछ है भी नहीं। ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 3 मिनट में मिलता हूं मैं आपसे। नाउ रेस्ट, 3 मिनट्स कंप्लीट रेस्ट, छोड़ दो, मैं चार्ट बंद कर देता हूं। कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 मिनट्स। चलो चलो लेट्स कंटिन्यू। अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्टली हाउ डू यू डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट? उसके लिए वेरियस मेजर्स, टोटल पॉपुलेशन, पीपल एक्टिवली सीक, पीपल इन वर्किंग एज, people actively seeking work, labor force, people who are able to find work and unable to find work. So unable to find work, unemployed. Working age defined as various definitions, but 18 to 59 in MOSPI and various other websites. Then labor force defined as people actively seeking work by population of cohort. Unemployment defined as people who are unable to find work, divided by labor force. How do you define work now? There are various methods of defining work: current, weekly status, current daily status, and principal status.
plus subsidiary status known as usual status. Which approach does the periodic labor force survey take? Approach of current weekly status and principal status. Which approach does Center for Monitoring of Indian Economy take? Current daily status, CMIE. यही पढ़ा था, है ना? ये तो कल भी रिवाइज किया है हमने पीआरपी में, बट स्टिल वील सी दिस अगेन. कुछ खास नहीं है यहां पर. भी अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया. डिविडेंड में हमने कंपनी का स्ट्रक्चर देखा था. डेमोग्राफी में हमने क्या देखा था? दिस पॉपुलेशन ग्राफ, द 6 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन, which I am assuming you have read by yourself. ठीक है. अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था called randomized control trial. Randomized control trial के लिए Nobel Prize was given to Abhijit Banerjee and Esther Duflo to answer the question of poverty or measuring poverty using randomized control trial. ये किया था. Then usual status approach. Approach of usual status. What do? We first check whether you are in labor force or not. To be in labor force, you must be actively seeking work for more than 182 days. If you are able to find work for half of this, known as principal status employed. Able to find work for 30 days, usual status, subsidiary status employed. Principal status plus subsidiary status known as usual status. Ab second, current weekly status approach. Last 1 week, were you in the labor force? If yes, were you able to find work for at least 1 hour on 1 day? Then considered employed. Better thing in current weekly status was able to find the seasonality of unemployment. Current daily status measuring intensity of unemployment. An index was created. Index was created how? If you are able to find work for 0 to 1 hour, from 1 to 4 hours, from 4 to 8 hours. This was seen. Therefore, if I measure the numbers, usual status is the headline measure. But usual status में सबसे कम आएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उससे ज्यादा आएगा करंट वीकली स्टेटस में, उससे ज्यादा आएगा करंट डेली स्टेटस में. PLFS का अगर मैं डेटा देखूं, PLFS will do a survey every 3 months in urban areas, every 1 year in complete urban plus rural areas, and it will use these two approaches, current weekly status plus usual status approach. This approach will be used by PLFS. ये हमने देखा था. फिर next thing we saw, reasons for unemployment. Why does unemployment occur? Unemployment can occur because at the macroeconomic level हमने देखा था 2 reasons. One reason given by classical economist known as wage rate unemployment. One reason given as Keynesian economists explaining the concept of cyclical unemployment. Cyclical unemployment, again, one of the most important graphs of economy. Economy goes in up and down cycles. Linked to concept of counter cyclical fiscal policy. इस साल की बजट में भी दिख रही है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग, ग्रोथ हैज स्लोड, गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड टैक्स, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर आल्सो. So government is spending because economy is in a down cycle. When economy will be back to up cycle, when economy will be in boom, government will then increase tax rates later. Counter cyclical fiscal policy. है ना, ये हमने देखा था. अब second reason for unemployment could be at the personal level. Various types of unemployment. Structural unemployment defined in terms of immobility. Immobility due to skills, due to industry, due to geography, because of change in structure. Second, voluntary unemployment, don't want to take up jobs. Frictional unemployment due to a problem of information in the labor market being inefficient. Lastly, the idea of seasonal unemployment. These 4 types of unemployment will always exist in an economy, known as natural rate of unemployment. One problem was cyclical unemployment as explained by Keynes. This should not exist in the economy, explained here. ठीक है.
इसमें we also read a couple of other things. Underemployment, not employed as per the relevant skills, disguised unemployment, marginal productivity of labor is equal to 0. ये पढ़ा था. अब इसके बाद natural rate of unemployment we proved as non-accelerating inflationary rate of unemployment. नायरू हमने यहाँ पे प्रूव किया था. Then what did we do after this? Then we understood India's actual problem of jobless growth. Does India have a jobless growth problem? इसके लिए we used a concept called employment elasticity. Employment elasticity in India was declining. This was the reason given for jobless growth, but there was a counter argument saying that unemployment rate is almost constant, labor force participation rate is also constant, population is increasing, so job creation is not slow. Problem is of voluntary unemployment, problem is of skilling, problem is of employability. India has an employability crisis. डीयू वालों की थोड़ी सी बेइज्जती हुई थी यहाँ पर, सर्वे बताया था आपको डीयू का. ठीक है, कोई नहीं, मैं भी डीयू से हूँ. ठीक है, आई वॉज ऑल्सो नॉट एम्प्लॉयबल एज अ डॉक्टर, दैट इज वाई आई एम हियर आई होप आई एम एम्प्लॉयबल. अब we compared the employment elasticity of various sectors of the economy. Agriculture has low employment elasticity, services is engine of growth but low employment elasticity, manufacturing has high employment elasticity, this has stayed stagnant. Now if you know this context, अब आपको ये context अगर याद है तो अब इस साल गवर्नमेंट ने क्या किया ये मैं आपको कल बताऊंगा. something called a new national manufacturing mission. अब क्यों आया वो, नाउ यू शुड नो, है ना. प्रॉब्लम ऑफ जॉब स्किल मिसमैच, वी वेंट टू अंडरस्टैंड स्किलिंग आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, हाउ स्किलिंग हैपेंस. स्किलिंग आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया में वी रेड फर्स्टली वेरियस बॉडीज दैट आर देयर. नाउ व्हाट इज द की मिशन ऑफ द गवर्नमेंट? की मिशन इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन. इसमें कुछ बॉडीज थी इसके अंडर. There was a steering committee here, executive arm, bodies like National Skill Development Agency, National Skill Development Corporation, National Council on Vocational and Educational Training. ऐसी कोई bodies थी. Right? Then this National Skill Development Mission was the flagship mission. इसके अंदर there were some schemes. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. Two important components: short term training, give industry relevant skills, recognition of prior learning, recognize informal work. In recognition of prior learning, what framework will we use? National skill qualification framework. यहाँ पर testing agencies वगैरह के बारे में पढ़ा था, how this happens. Then one more initiative, important initiative of the government, National Career Service, to improve efficiency of labor market. So by Ministry of Labor, to link to various portals, Asim portal, etc., completely free of cost service given by government. Here we then moved on to various other things called nature of employment. Nature of employment. Nature of employment can be your rights are explicitly recognized, formal. Rights are there, but first you have to prove you are an employee. Informal. You are hired for a task or a contract known as contractual labor, contractual worker. In this context, a study of India's labor laws. Labor laws are laws that govern employer-employee relationship. What are the 4 labor laws? Code on wages, code on industrial relations, code on social security, code on occupational safety and health. Concept of something called fixed term employment. To solve this formal informal hiring problem, concept of fixed term employment.
need of unshackling India's MSMEs, problem of voluntary dwarfism. Voluntary dwarfism problem, India's MSMEs were shackled, voluntarily staying dwarfs because of the problem of huge compliance burden, hiring of contractual workers. Then two other types of employment also very important this year announced in the budget, gig and platform workers. Gig workers, they are just performing their gigs, paid per gig. Platform, work on various platforms such as Zomato, Uber, etc. Gig workers were classified by Niti Aayog as platform or non-platform worker. Problem here was definition was not proper, there was overlap. है ना, यही था broadly. Then various type of workers as we read in NSO, cultivators, own account workers, self-employed workers. Right, this we have read. Next topic was topic of poverty. Poverty में सबसे पहले क्या था? How do you define poverty? Definition has to be broad. So we looked at World Bank's definition of poverty going into various dimensions of poverty as defined by World Bank. Next thing has to be measurement of poverty. Measurement has to be done in a quantifiable manner. Measurement. This has to be definitely quantifiable. So three options here were income, wealth and consumption expenditure. We chose consumption expenditure because it is most stable and it is easy to report it also. Right? Where do we take this data from? Official estimates are available called Household Consumption Expenditure Survey. HCES last conducted in 2022-23. Then two reasons of measuring poverty. One measurement of poverty is only for national progress. One measurement is to see actually if people need to be beneficiary of various schemes. This beneficiary measurement was done through socio-economic caste census, extremely important for this year. What were we doing in SECC? There were some automatically included households, automatically excluded households, and there were various inclusion criteria. Based on 7 inclusion parameters, we will see how deprived you are and make you beneficiaries for various schemes. Second measurement of poverty was being done for national progress. Here concept of poverty line. Concept of poverty line mein, what do we do? First we create a basket of goods and services. Then we price this basket known as poverty line basket. The price of this basket is known as poverty line. We take data of consumption expenditure. We will put one line on it, call people below poverty line or above poverty line on the basis of this. Two important concepts emerged here. How many people are poor? Head count ratio. How poor are the poor? Intensity of poverty. Intensity of poverty and head count ratio. Then based on analyzing these poverty lines, concept of poverty gap, concept of more distributionally sensitive squared poverty gap. Question आया 2012 prelims में squared poverty gap पे. Then India's measurement of poverty based on this process. India's measurement of poverty सबसे पहले came Dandekar and Rath committee. Dandekar and Rath ने क्या कहा? Purely on the basis of consumption of calories, calorie based poverty, 2200 calories. Then came अलग committee. अलग साहब ने क्या किया? अलग अलग कर दिया. किसको अलग अलग कर दिया? रूरल और अर्बन को अलग अलग कर दिया. Then came लकड़ावाला committee. Lakdawala committee also suggested some radical changes. They expanded poverty line basket to include clothing, shelter, transportation, various things beyond the food expenditure. Then linking this to inflation. Linking this to
inflation so that we don't have to measure every single year. You link it to inflation. Counted poverty for household of 5 people. From Lakdawala committee, very important committee, Suresh Tendulkar committee, Professor Suresh Tendulkar of Delhi University. सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या बोला? सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कहा सबसे पहले expand the poverty line. So move beyond calories. Include health expenditure also, education expenditure also. Account for behavioral poverty also. Include behavioral poverty in this. Right? Normative and behavioral components. If poor households are spending on alcohol, you should count that also, not just what your estimation of the basket is. Uniform poverty line basket throughout India. Change in recall period. Very good. Recall period was made mixed recall period, mixed reference period. Then here there was some controversy. They had come to 5,000 consumption expenditure per household per month. यहाँ से वो controversy हुई 32 rupees per day controversy. So government had to nominate one more committee called Rangarajan Committee. Rangarajan Committee made it even more scientific. Mixed modified recall period. How did they make it more scientific? Food consumption based on ICMR norms, Indian Council of Medical Research. They also did something, finally came out with rupees 47 per day consumption expenditure. Ultimately, government chose to accept recommendations of Suresh Tendulkar committee only after the controversy had died down, updated as per inflation. So if I ask you, how is poverty measured in India? Poverty is measured in India on the basis of headcount ratio, based on Suresh Tendulkar committee poverty line basket, through household consumption expenditure survey data, based on mixed recall period. These 4 things need to come to mind, then you answer the question of how poverty is measured in India. Then we compared this to international poverty line. International poverty line is by World Bank. World Bank क्या करता है? What does World Bank see? Per person consumption expenditure per day. Per person per day consumption expenditure. Right? World Bank classifies countries into GNI per capita के basis पे. GNI per capita के basis पे you are classified into various countries. High income countries, high middle income countries, low middle income countries, and low income countries. India fixes into this group. For every group there is a different poverty line. For low income countries, poverty line right now is $2.15 per day per person per day consumption expenditure. This is known as something called extreme poverty. For India, low middle income countries, 2017 update के हिसाब से $3.65. Here we referred this in context of extreme poverty and sustainable development goals. अब यहाँ पर एक मेंस का टॉपिक भी है, progress of poverty alleviation in India. If we see poverty alleviation on this basis, extreme poverty, India has done a great job. But India's situation is like something shown on this graph. If this is our poverty line and this is low middle income countries poverty line, lot of the population of India is here. So they are vulnerable group. So we have had a record pace of poverty alleviation, but if they are in this group, this leads to a problem because they can fall back if there is any bad event like COVID. Then we came to next measurement of poverty,
Next measurement of poverty can be done on the basis of not going beyond income, not only income, multidimensionally measuring poverty called multidimensional poverty index. There is a global multidimensional poverty index released by whom? बताओ कौन रिलीज करता है ये ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? There are two organizations. Two organizations are there. Very good. OPHI and UNDP. ठीक है, OPHI और UNDP दोनों रिलीज करते हैं मिलके. They have 10 total criteria divided into 3: health, education and standard of living. How do they calculate total poverty? Head count ratio into intensity. This is how MPI score is assigned. Average intensity and head count ratio are multiplied. India also made a multidimensional poverty index for itself. If I look at India's MPI, how is it different? Made by Niti Aayog. It has 2 extra criteria. One in health, with regards to maternal health. One in regards to standard of living, with regards to bank account. Multidimensional poverty index of India. Then we saw that now we came to, after understanding this, we came to the concept of human development. In human development, we saw basically there are 4 approaches of human development. What are these 4 approaches of human development? इनकम अप्रोच, वेरी गुड. पिलर्स भी करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, और क्या क्या है? बेसिक नीड्स अप्रोच given by ILO consisting of 6 basic needs, and capability approach given by Amartya Sen. Human development also has 4 pillars. What are these 4 pillars of human development? Equity, good. Sustainability, good. Equity, sustainability. 2 more, productivity and empowerment. है ना? फिर हमने कुछ वेरियस अदर इंडेसेस देखे थे. So how did, which indices did we see? United Nations Development Program comes out with a report called Human Development Report. It has 5 important indices: Human Development Index, Multidimensional Poverty Index, Inequality Adjusted Human Development Index, Gender Inequality Index, Gender Development Index. ये 5 इंडेसेस देखे थे हमने. सारे इंडेसेस एक करके देख लेते हैं. Human Development Index looks at 3 things again: health, education, standard of living. In health, life expectancy at birth. In education, mean years of schooling, expected years of schooling. In standard of living, GNI per capita. What did we do here? Take a geometric mean, A into B into C का cube root. Geometric mean. Adjust this Human Development Index for inequality and you get inequality adjusted HDI. So some loss will be there based on inequality. Inequality adjusted HDI. Then we saw Gender Development Index, GDI. Comparison of Gender Development Index was comparison of female and male HDI. Best score is as close as you can be to 1. जितना 1 के क्लोज होगे उतना अच्छा होगा. India was in bottom group here, unfortunately. Then there was Gender Inequality Index. Gender Inequality Index, here we see gap in reproduction. Reproduction में हम gap देख नहीं सकते, तो we count reproduction but we don't see gap in health. We see gap in terms of empowerment and in forms of labor market. इसके various indicators थे. As close to 0 is better. जितना close to 0 है उतना better है. यहाँ पर India was
having a huge gap. Rank was close to 118. So again, not great performance, but then when we were looking at all of these indicators, we saw India's progress. And compared to the world, India's progress has been better on all of these indicators. Remember, we saw those 5 graphs from the directly from the UNDP website, how India is performing as compared to the world average. So as compared to world average, India is doing a phenomenal job. This we had seen. India's pace of poverty reduction we have seen. Then we came to the topic of inequality. Inequality. Firstly, we saw reasons for inequality. Reasons can be modern reasons. This was the final one. इससे पहले हमने देखा था traditional reasons of inequality, Marxist reasons of inequality. Traditional reasons तो because of birth. Marxist inequality was due to division of society into 2 classes, proletariat and the bourgeoisie. Proletariat are the ones who only own labor, so they only get paid wages. Bourgeoisie get paid interest, rent and profit. What was Marx's central argument? Marx's central argument was that rate of return on capital is more than rate of return on labor. This leads to inequality. Profit is the unpaid labor of the workers. Workers of the world unite, for you have nothing to lose but your chains. We must establish a dictatorship of the proletariat. This was the Marxist idea. This is not my idea. ठीक है, फिर कोई क्लिप काट के कहीं डाल देगा. This is, I hope, this is just the Marxist idea. But this was proven wrong. This was proven wrong by the modern theory of inequality. Modern theory said this condition is not true. Then why does inequality arise? It arises due to survival of the firm. Whether firms will survive or not. Survival of the firm was linked to either you can be price differentiating, आप product ही अच्छा बना दो. दूसरा can be unfair practices. Unfair practices exist because there is no rule of law. Therefore, lack of rule of law was seen as the main reason for inequality in the world. Then we came to measurement of inequality. How do you measure inequality? So for that, you established a Lorenz curve. You wrote something called, here you would write percentage of income. Here you would write percentage of population. And you would draw this line called line of absolute equality. Then you would draw it for various countries. हमने क्रोएशिया और ब्राजील का ऐसा ग्राफ देखा था. This was Croatia. This was Brazil. Brazil is farther away from line of absolute equality. So Brazil is less equal. Much less equal as compared to Croatia in this case. From here we could identify a triangle. We could identify a triangle like this. Triangle of absolute equality, and from here we could derive something called Gini coefficient. Gini coefficient was this area divided by A plus B. This was Gini coefficient. Best Gini coefficient for complete equality was 0. If you have 0 Gini coefficient, you are most equal. If you have 1 Gini coefficient, you are completely unequal. अब यहां पे हमने एक और चीज पढ़ी. Here, after reading Gini coefficient, we also read 2 models of growth. Models of growth can be focusing only on this sector, trickle down economics. Problem was various assumptions that usually do not turn out to be true. Opposite of this is bottom up growth, known as inclusive growth, where you focus on this sector and this then gets empowered. Related to this, we also studied a concept of poverty trap. In poverty trap, we made a graph like this. ये ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है. इस टाइप का कुछ ग्राफ था.
What was the main idea of poverty trap? Future income is lesser than present income. This idea was there mainly in poverty trap. To solve the poverty trap, you can have monetary or non-monetary interventions. One of the most important monetary interventions of Government of India here is MG Narega. Again, very important for this year. MG Narega, what was the idea of MG Narega? 100 days of unskilled work given by Panchayat. If not given, you will be given unemployment allowance. Here we read the recent controversy, Aadhaar based payment system. Concept of Aadhaar based payment system, making it compulsory. Some workers were left excluded here because of these compulsions. है ना? Then certain reforms in Manrega we had read. चलो, this topic is also done. बोलते बोलते थक गया हूं मैं. But thankfully we have covered low unemployment, equity in the distribution of income. आ रहा है मजा? Enjoying yourself? मजे मत लो, पढ़ाई करो. याद आ रहा है? See, this is, ये जो प्रोसेस मैं आपके सामने अभी कर रहा हूं, this is what you need to do when you are revising economy in one day. I want आपकी ये pace of revision हो, है ना? When I want this to be your pace of revision when you are revising economy by yourself. जब खुद से रिवाइज कर रहे हो तब इस लेवल की पेस आपकी रहनी चाहिए, तभी एक दिन में रिवाइज होगा ना यार. और अगर मैं ही नहीं कर सकता एक दिन में रिवाइज, तो आप कैसे करोगे? दैट इज व्हाई आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस टू यू. इसलिए मैं कर रहा हूं आपको डेमोन्स्ट्रेट. ब्रेक लेते हैं फॉर 5 minutes. We'll come back and do low and stable rate of inflation, concept of money and monetary policy after this. 5 minutes break we'll take. चैट बंद कर देते हैं.
चलो लेट्स कंटिन्यू. कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्लेशन. Inflation. How does inflation happen? Aggregate demand, aggregate supply curve. Aggregate demand can move up, leading to inflation called demand pull inflation. Demand pull. Supply curve can move inside, leading to pushing the prices up. Cost push inflation. Various other type of inflation also we have read that I'm not teaching you right now. वो तो I'm assuming आपको याद ही होगा. Then we'll see major topic here is measurement of inflation. How do we choose to measure inflation? So firstly, we have to identify a target group. For that target group, we have to make a basket of commodities. Of this basket of commodities, we have to fix the price in a base year. We have to fix a base year. On the basis of this base year, we will construct an index. Then we will see change in price levels. This is fixed basket of commodities. If I want to measure overall at GDP level, if I want to see inflation, the measure was the GDP deflator. यहाँ पर तो कोई basket of commodities नहीं है, but basket of commodities बनाऊंगा, then I will measure inflation like this. ठीक है? Which all baskets can I construct? I can construct baskets based on price that consumers are paying, known as consumer price index. I can make CPI for various groups, for rural India, for urban India, a combined group. I can also make it for industrial workers, for agricultural laborers, for rural laborers. ये भी मैं बना सकता हूँ. Various other baskets I can make. I can make price that wholesalers are paying, known as wholesale price index. Differences here will be it will not capture services. Services को capture नहीं करेगा. Right? This we have seen. Ab, there are various purposes to these various indices. CPI, industrial workers, agricultural laborer, rural laborer. These are made by Ministry of Labor in Labor Bureau. Ministry of Labor. What will Ministry of Labor do? Ministry of Labor will count these for what purpose? Industrial workers for dearness allowance fixation. Rural and agricultural laborers for MG Narega wages. This is mainly for inflation targeting by RBI. What parameter does RBI use for inflation targeting? CPI combined. What is the tolerance band of RBI? 4 plus minus 2%. है ना? This is what we saw as far as CPI was concerned. WPI, completely different weight of goods. So manufactured goods had the maximum weightage here. Then there were primary articles and food and energy. Base years are also fixed here. In this also and this also. Then criteria of including and excluding items we have seen. There is a news that CPI base year will be shifted to 2024. Why does it have to be shifted to 2024? Because we have the new Household Consumption Expenditure Survey has now been released. HCES has now been released. In this measurement of inflation, Economic Survey suggested firstly a change. First change suggested by Economic Survey was core inflation. Core inflation in CPI we will remove two things. Food and beverages we will remove. Fuel and light we will remove. Core inflation would then be seen as a more stable measure to measure economic inflation. Even then this was not getting stable, so we came up with new idea, refined core inflation. Here we will remove petrol for vehicles, diesel for vehicles. Why was this done? They were in part of miscellaneous group. Then we came to refined core inflation as the final measure for
seeing how effective monetary policy was. Targeting is done there, effectiveness is checked here. ये हमने देखा था. Then we saw ideally CPI and WPI should ideally move together. They should ideally move together, but they were not moving together. There was a divergence between CPI and WPI. Reasons for this divergence seen mainly due to COVID. Reasons for divergence was one, different basket of commodities. Second reason for divergence, effect of tax and subsidy, especially effect of indirect taxes in the case of petrol. This led to divergence. Because of this divergence, proposal is there to make a new type of index, producer price index, that will capture inflation prices more effectively at factor cost at the producer level. So this would be a much better instrument. Why is PPI better? Because it can also capture services and it will be actually at producer level. So a better index to check. है ना? Then we read something called types of inflation. Types were on the basis of speed, galloping, trotting inflation, walking inflation, etc. Running inflation. Then types based on cause, structural inflation, shrinkflation, skewflation, stagflation. Stagflation was important. Stagnation in the economy, low growth. Low means almost at 0%, maybe even negative, and inflation together. There was an inflation growth trade-off. Inflation growth trade-off was there. But in stagflation, it is an exception. Growth is also low, inflation is high. Then we read effects of inflation. Effects of inflation. Effects on borrowers and lenders, seen as a formula: nominal interest, nominal return, या nominal rate of interest minus inflation is equal to real rate of interest. So real gains. Borrower has to pay the real gains. Inflation, the lender will earn the real gains. High inflation, lender will lose, borrowers will benefit. This we saw. Effects of inflation on saving and investment, both will decline due to inflation. Effect of inflation on consumers and producers. Consumers lose out, producers benefit, but in the short run. Therefore, need of low and stable rate of inflation. That rate of inflation that does not lead to any sort of loss of demand, but leads to increase in profit of producer. Then finally, effects of inflation on taxpayers, taxpayer and tax collector. Here we came up with a very important concept called automatic stabilizer in the economy. For this automatic stabilizer in the economy, we saw something called a progressive taxation model. For this progressive taxation model, there was an effect called fiscal drag, leading to being an automatic stabilizer in the economy, preventing the economy from going into something called price wage spiral. है ना? खुद को तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना मैं, याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? गुड. इन्फ्लेशन छोटा सा ही टॉपिक था. नेक्स्ट टॉपिक वाज मनी. मनी कल भी रिवाइज कराया था आपको, बट कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं. मनी में वाई मनी, 6 रीजंस और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी. क्या क्या थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी? अब जरा जल्दी से बता दो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी.
Characteristics. Permanent and perpetual want. Scarcity. Then next characteristic here was fungibility, storability, non-counterfeitability, and should be available as measure of supply. Supply available होनी चाहिए to facilitate transactions and growth. Based on these characteristics, earlier we selected gold. We had three types of reserve systems. कौन से reserve? Full reserve, fractional reserve, and minimum reserve system. Why were you trusting gold? Because you were seeing the ability of this person, ability of government to exchange paper notes for gold. Why did paper notes have to be introduced? Paper notes had to be introduced to solve the problem of fungibility. When we come to this fractional reserve system, there is a need of introducing central bank. Why every country in the world has a central bank is in this fractional reserve system. Then when we came to minimum reserve system, still we need to ensure acceptability of money. In minimum reserve, to ensure acceptability, you will say order is enforced for value, fiat money. You said everyone must accept this money for extinguishing their claim, legal tender, fiat money and legal tender money. Modern money simply based on trust in the economy, trust-based money. Whose job is it to maintain trust? The person who issues money, known as Reserve Bank of India or central bank in any other currency. Ab next topic, demand of money. Two types of demand. Money demanded for transactive purpose, transaction demand. Here we wrote Fisher equation. What does Fisher equation say? Money demanded for transactive purpose into velocity is equal to price level into output. From here, price level is equal to some constant, ऐसे लिख देते हैं, velocity into money demanded for transactions divided by output. Here comes the idea of classical economist who say that price level depends on money in the economy. Simply the amount of money is the major determinant of price levels. Comes the idea of Keynesian economists. They say M is important, but velocity also matters, output also matters. This thing was there. है ना? Second demand of money was precautionary demand. Precautionary demand anyway we did not study, only for some emergency purposes. Third demand of money, speculative demand of money, depending on interest rates. Speculative demand of money equal to R max minus R divided by R minus R minimum. Speculative demand of money. Speculative demand of money dependent on interest rates. Here we also try to understand the linkage between interest rates, asset prices, and yield and premium. Interest rates and asset prices. What is the relationship? Interest rate asset prices का relationship बताओ. Inverse relationship. Yield का relationship. Interest rate with yield. Yield के साथ कैसा relationship है? What is the relationship with yield? Proportional. Yield. Interest rate inversely proportional to premium. This understanding we developed when we understood demand of money. Demand of money समझने के बाद we understood supply of money.
money supply. Who supplies money in the economy? RBI supplies money in the economy. Is RBI a profit making institution? Its objective is not to make profit, but it makes profit. It does not look at what price of money is when it supplies money. Price of money is interest rates. So money supply graph will be like this. Money supply. Demand of money graph. Money demand will be equal to money demanded for transactions plus money demanded for speculative purpose, which will be equal to, again, some constant plus some constant divided by R for a fixed level of GDP. So graph of money demand was becoming something like this. Money demanded at some GDP level. Then if I decrease the money supply, interest rates increase. If I increase the money supply, interest rates decrease. Next important graph of economy, money supply and interest rates. Then next topic was measurement of money supply. Measurement of money supply could be done in the basis of 4 measures: M1, M2, M3, M4. As I go down, coverage will increase, liquidity will decrease. How comprehensive I am being. M1 was currency in circulation plus demand deposits. M2 was M1 plus post office demand deposits. M3 was M1 plus time deposits in bank. M4 included all things, post office demand deposits as well as post office time deposits as well as demand deposits of bank, time deposits of bank, and currency in circulation. Measurement of money supply, various measures of money supply. Measurement of money supply. Money supply in the economy was equal to 2 factors, money multiplier into M naught. Money multiplier was due to banking system. Banking system also having fractional reserve policy. Money multiplier depended on 2 things. Money multiplier depended on 2 things, currency deposit ratio, cash divided by deposit, dependent on reserve deposit ratio, reserves divided by deposits. Money multiplier was inversely proportional to CDR. Money multiplier was inversely proportional to reserve deposit ratio. This is what we had read. Reserve deposit ratio in India consisted of CRR and SLR. Completing topic of money supply and money multiplier. Next topic, control of money supply. How can RBI control the money supply? To control money supply, RBI can go for either controlling M or controlling M naught. This is idea of open market operations can be done here. Here I can do changes in various reserves. These measures whose impact is measurable, quantifiable, are quantitative tools of monetary policy. Measures whose impact I cannot measure, qualitative tools. Qualitative tools of monetary policy. Let's look at first quantitative measures. Quantitative. एक स्टोरी बताऊंगा आपको बहुत इंटरेस्टिंग अभी. Money supply is equal to M into M naught. Money supply can be controlled by controlling M naught by performing open market operations, special type of open market operations, market stabilization scheme or sterilization scheme. Money multiplier can be controlled by controlling cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, adjusting the liquidity adjustment facility, adjusting the marginal standing facility. Liquidity adjustment facility included 2 things: repo rate, repurchase obligation rate, reverse repo rate. Banks are parking money with RBI. CRR given in
RBI Act, any maximum limit? No. Does bank earn any interest here? No. SLR given in Banking Regulation Act, maximum limit 40%. Does bank earn interest here? Yes. Designated assets by RBI including government securities, etc., etc. Repo rate, reverse repo rate, repurchase obligation transaction, reverse repurchase obligation transaction. If you use your SLR quota of securities, if you use your SLR quota of securities to borrow, आप SLR quota से अगर borrow करोगे, you will get MSF rate. MSF rate will always be higher than repo rate, है ना? अब based on these things, this is quantitative tools. We can also have qualitative tools. Qualitative, whose impact cannot be measured. Moral suasion, nudging of banks, loan to value ratio, selective credit control, credit rationing, positive and negative. Positive example was priority sector lending. एक और चीज है यहाँ पर क्वालिटेटिव टूल्स में. Which is the other thing that in qualitative tools that is left? क्या छोड़ दिया मैंने क्वालिटेटिव टूल्स में? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तो लिख दिया ना. डायरेक्ट एक्शन, वेरी गुड. डायरेक्ट एक्शन, है ना? What is the target or what are the possible impacts of monetary policy? There can be two types of monetary policy. RBI wants to increase the money supply. Expansionary monetary policy. RBI needs to contract the money supply. Contractionary monetary policy. है ना? What can be the possible cases? This is inflation, this is growth. High inflation, high growth. RBI's target, inflation targeting framework of RBI, 4 plus minus 2% as measured by CPI combined. है ना? In this case, what will RBI do? Reduce the money supply and get it back into the band. Second case, high growth, low inflation. Don't do anything, unchanged. John Lawrence policy of masterly inactivity. पढ़ लेना थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री भी, है ना? Masterly inactivity, don't do anything. Third case, low growth, high inflation. ये बाद में देखेंगे, सबसे खराब केस है ये. This is low growth, low inflation. In this case, increase the money supply and focus on growth till inflation is in tolerance band. Last case, most horrendous case, low growth, high inflation, known as stagflation. What to do in stagflation? Only monetary policy will not help. What do we need to do here? Calibrated fiscal and monetary policy response. Fiscal policy and monetary policy have to work together. Calibrated response of monetary and fiscal policy. RBI also tells about, or rather, how does RBI decide monetary policy? RBI's decision of monetary policy by Monetary Policy Committee. How many members? 6 members. Where from? 3 from government, 3 from RBI. What does it decide? Decides the repo rate only, which is the benchmark rate, repo rate. That's all it decides. Repurchase obligation rate. Quorum of this Monetary Policy Committee, 4 members. 4 members is the quorum. इस 4 members में क्या बात की जाती है? Including governor. What if MPC cannot maintain? What if MPC cannot, maintain it at 4 plus minus 2%? They have to give a report to the government
if they cannot maintain inflation at this level for 9 consecutive months or 3 consecutive quarters, can government give instructions to MPC? Yes, but only in writing. For transparency, they have to publish minutes of meeting, also have to publish a report every 6 months. ये सब पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में. RBI will also give expected future decision. Expected future decision of RBI given in something called stance. What they are going to do in the next meeting. When do meetings happen? As per legal requirements, bi-monthly. Actually 4 in a year. Legal requirement is 4 times in a year. Actual meetings happen bi-monthly. So 6 times per year is actual meeting. मनी सप्लाई में ही एक चीज पढ़ी थी कॉल्ड, वी रेड द केस ऑफ यूएसए. यूएसए में क्या हो रहा था? समथिंग कॉल्ड क्वांटिटेटिव ईजिंग. ह्यूज इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय यूएस फेड. This led to huge inflation. Now they have to pass Inflation Reduction Act. This is known as federal tapering. है ना? चलो अब एक चीज, 2 चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. मनी टॉपिक इज ऑलमोस्ट डन. थोड़ी सी 1-2 इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं आपको. ठीक है, पहले तो थोड़ा शांत हो जाओ, चैट थोड़ा बंद कर लो. 2 इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा आपको. एक पढ़ने वाली चीज, एक ऐसी मजाक. ठीक है. हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर? ये टर्म सुनिए आपने, टेपर टैंट्रम. कितने कॉल आएंगे यार. मीनिंग क्या है इसका? नहीं सुना तो कोई बात नहीं. Anybody who can explain the meaning of this word, taper tantrum? जिसने नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही ना बताने के लिए. एज ऑफ इजी मनी देखी किसी ने? बोला था मैंने एज ऑफ इजी मनी देखने का. देखो अब सुनो प्लीज. नाउ लिसन. चैट बंद करनी पड़ेगी. US Fed was doing QE, quantitative easing. They were basically increasing M0 at very high levels because M was very low. है ना? Money supply is equal to M into M0. This we have read. This was very low. Banks were not lending in the US after global financial crisis. M0 they had to increase. Ultimately, money supply increased. Banks started lending also. Recovery of USA started. Ultimately, money supply increased at huge levels. When money supply increases at huge levels, तब क्या होता है? Demand of money, supply of money. Money supply increases to huge levels. क्या होगा? Huge fall in interest rates. Fall in interest rates से क्या होता है? Consumption increase, investment increase. यही होता है. Consumption increase, investment increase. This is what happens. When this happens, then what do we do? This leads to increase in aggregate demand. Aggregate demand में increase होता है तो क्या होता है? Aggregate demand, aggregate supply, increase in aggregate demand will lead to, of course, some rising inflation, but also rising growth. ठीक है.
अब जरा कैपिटल मार्केट से रिलेट करो. When growth is happening, what will happen to profit of firm? Profits of firm will go up. Yes, profits of firm will go up. इसमें तो I'm sure you can extrapolate from here. Profits of firm will go up. When profits of firm will go up, firms are making huge profits. What is going to happen to the share prices? मैं आपको कहूं कि रिलायंस का, मुझे पता है कि नेक्स्ट क्वार्टर का, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं. रिलायंस के नेक्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट रिपोर्ट जो आने वाली है, इट इज गोइंग टू बी 100 टाइम्स हायर देन लास्ट क्वार्टर्स प्रॉफिट. शेयर प्राइसेस विल गो अप. तो अगर मैं अब इसको रिलेट करूं टू द ग्राफ ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट ऐसे जाने लगेगी, ऊपर जाने लगेगी व्हेन ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग. यहां तक बात समझ आ रही है? अभी टेपर टेंट्रम अभी बताया नहीं है. समझ आ रहा होगा ये तो अब आपको, तुम सब पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो क्या हो रहा था ना, यूएसए में क्या हो रहा था, यूएसए में क्या हो रहा था, दैट ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग. दिस वाज द कंडीशन ऑफ यूएस मार्केट्स. अब लेकिन मनी सप्लाई एक लेवल से ऊपर जा चुकी है. मनी सप्लाई हैज बिकम वेरी हाई. अब यूएस में सेंट्रल बैंक का नाम है यूएस फेडरल रिजर्व, यूएस फेड. अब जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर साहब हैं, अब तो ही हैज टू डू व्हाट. नाउ व्हेन दिस इज हैपनिंग, दिस इज आल्सो हैपनिंग. Inflation is also increasing. When inflation is increasing many fold. Inflation is increasing many fold. तब क्या होगा? Obviously, central bank has to control inflation. To control inflation, he also has to reduce the money supply. He has to get it back now. What is the way to reduce money supply now? To increase the interest rates. ये करना पड़ेगा ना, ये भी समझ आ रहा होगा. बिकॉज ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कंट्रोल तो करनी है, इन्फ्लेशन भी तो हो रही है ग्रोथ के साथ. द मोमेंट द यूएस फेड, अब यूएस से मैं अब एक्चुअल कंडीशन बताता हूं. द मोमेंट द यूएस फेड वुड say that we want to increase interest rates, stock market in USA would just take a nose dive. कि यार अब तो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब मनी सप्लाई कम होने वाली है, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम होने वाली है, मतलब ग्रोथ कम होने वाली है, मतलब हमारे प्रॉफिट्स कम होने वाले हैं. एंड शेयर मार्केट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, नॉट एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर. जैसे ही फेड ये बात करता था, यूएस फेड जैसे ही ये बात करता था, वी वांट टू रेज इंटरेस्ट रेट्स, द मार्केट लाइक अ बेबी वुड थ्रो अ टैंट्रम, द मार्केट वुड क्रैश. जैसे ही ये बात हुई, मार्केट क्रैश. जैसे ही मार्केट क्रैश होती है, यूएस इज बेसिकली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ कॉर्पोरेट ओलिगोपोली. इट इज जस्ट मैस्करेडिंग एज अ गवर्नमेंट. वो एक्चुअली इट इज अ कॉर्पोरेट बिजनेस रनिंग अ गवर्नमेंट का कोई एग्जांपल है, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. सो दिस वाज इंपैक्टिंग बिजनेसेस, फॉल ऑफ मार्केट. तो सब यूएस फेड को गाली देना शुरू कर देते हैं कि यार ये क्या, तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, यूएस फेड डजंट नो एनीथिंग. डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअल ट्वीट है 2018 की, यूएस फेड शुड think before it raises interest rates, look at the crash in the stock market, etc. Whenever the US Fed wants to taper the money supply, the market throws a tantrum like a baby by crashing. So for many years, US Fed wanted to raise the interest rates, could not raise interest rates. ठीक है, leading to problem of taper tantrum. Then what happened when we, after this, finally इतनी हद तक इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो गई दैट यू हैड टू यूज फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, नोन एज इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट. क्यों हो गई प्रॉब्लम? बिकॉज कोविड केम, तो सप्लाई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड, मनी सप्लाई इज ऑलरेडी वेरी हाई, एग्रीगेट सप्लाई गॉट अफेक्टेड, ह्यूज प्रॉब्लम. अब आपको फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी पड़ रही है, लीडिंग टू इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट. डिड एवरीथिंग कनेक्ट? समझ आया?
मीनिंग ऑफ वर्ड टेपर टैंट्रम, अब बताता हूं थोड़ी मजाक की बात, ठीक है, अब थोड़ी मजाक की बात, स्मॉल ब्रेक फॉर यू, नाम नहीं लूंगा किसी का। yesterday a close friend of mine, he has a cousin brother who wanted to talk to me about economy only. तो उन्होंने मुझे किसी के लेक्चर्स दिखाए, अगेन नॉट नेमिंग एनीवन। तो मैंने ही वाज रीडिंग फ्रॉम सम सोर्स एंड नॉट एनी वेल नोन टीचर बाय द वे, आप शायद नहीं जानते होंगे उनको, फ्रॉम सम लोकल कोचिंग, नॉट, मैं किसी ऐसे बड़े टीचर की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज just don't think I'm targeting somebody. Some local coaching in the place where he stays. You might not even have heard of this person. उन्होंने मेरे से, मैंने पूछा, अच्छा, मैंने कहा कि ठीक है बताओ आपने किस लेवल की पढ़ाई करी है। So I asked him what is reverse repo rate. He said, sir, reverse repo rate is the rate at which RBI borrows from banks. Fair enough. मैंने कहा आप मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे ये लाइन बोली, you said this line to me, that reverse repo rate is the rate at which RBI borrows from banks. मैंने कहा ये तो बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, अब मुझे बस दो तीन चीजें बता दो। Who prints money in the economy? Who prints money? RBI. Why does RBI need to borrow? पहले ये बता दो। दूसरा, यहां पर सेकंड वर्ड इज repo. Repo is not a common English word. Repo नाम का तो कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, तो why is it called repo? पहले ये बताओ, तुम्हें इसके आंसर पता है दोनों के? अगर तुम्हें नहीं पता हुआ तो मतलब फिर ये कहानी बताने का पॉइंट नहीं है। देन दिस कहानी इज मोर एंटी मी देन इट इज एंटी यू। है ना? आई होप तुम्हें बताऊं, ठीक है, क्योंकि देखो आई हैव टॉट यू रिवर्स रिपो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। व्हाई इज देयर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? बिकॉज इट इज आरबीआई's जॉब टू मेंटेन ट्रस्ट इन द इकोनॉमी. Why is this word called repo? Because it is repurchase obligation or repurchase option, not merely repo. When I asked him these two questions, he could not answer. तो फिर मैंने उनको वो बात बताई, उनके ब्रदर को भी और आपको भी मैं यही बात बता रहा हूं। देखो यार, इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है कि सिर्फ ये लाइन याद करके शायद आपका प्री निकल जाए। विदाउट नोइंग द थिंग्स रिटन इन येलो, इट इज पॉसिबल कि आपका प्री निकल जाए, शायद। आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल, बट लेट्स से कभी गलती से निकल गया। दिस सॉर्ट ऑफ लर्निंग, बस इतना जो व्हाइट में लिखा है, दिस सॉर्ट ऑफ लर्निंग इज नॉट वर्दी ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट इन माय ओपिनियन। दिस सॉर्ट ऑफ लर्निंग इज नॉट वर्दी। मैंने उनको भी यही कहा, मैंने कहा कि यू नीड टू कम अप विद नेचुरल क्वेश्चंस ना, यू नीड टू हैव दिस इंक्विजिटिव टेंडेंसी। यार क्यों कर रहा है आरबीआई बोरो और यहां पर वर्ड रिपो क्यों लिखा है? दिस इज वाई आई हैव ऑलवेज सेड, मैं आपको कभी नहीं रटवाऊंगा। दिस इज वाई आई ट्राई टू एक्सप्लेन। आपने देखा होगा, इट्स अ कॉमन थिंग दैट समटाइम्स आई विल डिले द क्लास। जैसे मैं आपको कह रहा हूं मैं करंट अफेयर्स बाद में पढ़ाना चाहता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू टीच यू till I have reached this level of clarity that every word that I write here has a logic behind it. Economy is human made. ठीक है, अगर मेडिकल साइंस आप पढ़ रहे हो और आपको कुछ रटना पड़े, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मेडिकल साइंस इज स्टडिंग द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी इज मेड बाय गॉड और नेचर, वॉट एवर योर थियोसॉफिकल बेंट. ह्यूमन बॉडी इज मेड बाय गॉड और बाय नेचर. वहां पर एवरीथिंग माइट नॉट बी लॉजिकल. इकोनॉमी ह्यूमंस हैव डिसाइडेड, ह्यूमंस हैव सैट डाउन एंड डिसाइडेड कि यार ये ऐसे होगा. व्हेन ह्यूमंस हैव डिसाइडेड, एवरीथिंग हैज टू बी लॉजिकल. किसी ने कुछ सोच के ही किया होगा. Till you don't understand the thinking behind it, till you don't understand the thinking behind it, you will never absorb the information, you will only learn or mug up the information. फिर मैंने उन पर्सन से पूछा कि उनका कौन सा अटेम्प्ट है,
सो इट वॉज हिज थर्ड अटेम्प्ट। मैंने कहा आपने इकोनॉमी पहले भी पढ़ा है? कहते हैं हाँ जी पहले भी पढ़ा है। मैंने कहा रिवर्स रिपो रेट आपने कितनी बार पढ़ा है? कहते 6-7 बार पढ़ा है। मैंने कहा क्यों जरूरत पड़ रही है आपको रिवर्स रिपो रेट 6-7 बार पढ़ने की? बिकॉज यू आर नॉट अब्सॉर्बिंग द इंफॉर्मेशन। सो इन दिस course at least, or whatever my endeavor of teaching has been in economy, I have tried कि आपको कुछ भी ना रखना पड़े, so that you don't have this problem. You might think that there has been some less coverage as far as I go, because there are some other things that we could have gone into and studied. उसी के लिए मैंने वो current affairs के 6 lectures रखे हैं ताकि coverage की problem हम वहां solve कर देंगे. But this is again my commitment to you. No matter which subject I am teaching, this I will never do. For me, teaching is pure. It is something that has come at a huge opportunity cost of resigning from the civil service. तो अब वो रेजिग्नेशन करके मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ. I hope even you appreciate this sentiment, and I will always carry this sentiment. It might be a little antithetical to the goal of the exam. शायद एग्जाम में इस डिटेल की जरूरत ना हो, इतने ज्यादा डिटेल की जरूरत ना हो, बट मुझे लगता है एक तो प्री में हो सकता है डिटेल की जरूरत ना हो, मेंस में तो मैंने आपको दिखाया ही है. पीआरपी पीपल हैव नॉट सीन इट, बट जब मैं फाउंडेशन में पढ़ा रहा था, आई डिड 15 क्वेश्चंस इन वन क्लास. In the PRP में obviously means has to be, you know, it has to be put at the background a little bit. Foundation में I had 45 classes to do. यहाँ I only had 25. But I did 15 questions in one class in 3 hours only from the topic of poverty across GS papers. Foundation वाले जो यहाँ पर हैं वो बता सकते हैं. This sort of conceptual understanding that you are developing, this will help you throughout life and throughout the exam. तभी मैं आपको कह रहा हूँ कल आप जो मेरे साथ सेशन अटेंड करो, अटेंड द सेशन which is the one that is also going out to people who are reading for the interview, ताकि हमें actually समझ आए how does the economy work and what is conceptual learning. This I am completely against इस type of learning, and in any subject except maybe history and some part of human geography आपको ये नहीं करना चाहिए. I hope you will agree with me. I also hope that you will, I mean, I don't know how much, ये तो आप ही बताओगे मुझे. If what I have done, whatever is written here in yellow, whatever I have done and I have gone into the depths of everything, I hope this has helped you also. ठीक है, बस यही बात थी मजे की. I hope this has helped. ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट्स स्टॉप हेयर टुडे. यहां तक रुकते हैं, है ना. द रेस्ट ऑफ द रिविजन वी विल डू व्हेन आई डू द करंट अफेयर्स क्लासेस विद यू. वहां पर हम इसी टाइप की रिविजन करते रहेंगे. ठीक है, I am going to write one message for all of you. आज I think in this class, everybody who is in this class, I will write one message for all of you on Telegram right now, because you are the people who I have taught for the first time. Again, very close to both batches, which is the foundation and the PRP batch. I will just write a message for all of you. Okay? And I would love if you could just go to my Telegram channel and respond with whatever your experience has been. This is also effectively my last class of economy in the prelims revision course, till I go to discussing current affairs from 17th March. And tomorrow, of course, we discuss the budget. ठीक है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही और बोलने की, otherwise we could have revised even more, but हमने काफी कर लिया. We did a lot of revision. ठीक है, so thank you for trusting me and thank you for being here. It was a wonderful experience. चैट में मत लिखो, टेलीग्राम पे लिखना. I would also be able to read. अभी आप यहाँ पर जो लिख रहे हो, I will not be able to read it. तो आपने जो भी लिखना है, please write it on Telegram. I'll just write a message for you. It will be up in the next 5 minutes. Please go to my Telegram and write whatever you have to. I would also love to hear from all of you. My Telegram channel is the same, Clarity for UPSC. I'll just write a message for all of you. Just want to thank you for your trust and your faith, for being with me, for tolerating me for such a long time. And it has frankly been one of the most interesting experiences of my life to teach economy to you. ठीक है, we will now meet next tomorrow, of course, on budget, and then we'll meet next in science and tech. अगर आपको economy
अगर आपको इकोनॉमी लॉजिकल लगा है तो साइंस एंड टेक में तो जो मजे आपको आने वाले हैं, राइट, हाउ लॉजिकली दैट सब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, वो तो प्रॉपर साइंस है, तो वहां तो कोई कहानी ही नहीं. सो वील now meet in science and tech. I hope we enjoy that also. Then we'll meet in current affairs. I'll also revise this with you in April. एक बार अप्रैल में भी एक ऐसा सेशन करेंगे जहां मैं आपको पूरा सब कुछ रिवाइज करा दूंगा. ठीक है, चलिए, see you. I'll just write a message on Telegram. Please come to Telegram and whatever you have, जो भी लिख रहे हो यहाँ पे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ यार, it's too quick. So please come to Telegram and write whatever you have to. Would love to hear your experience. Thank you. Have a good evening. Bye bye.